standing at the Turkman Gate in central Delhi, where a demolition drive carried out late Tuesday night has left the entire neighborhood under heavy police deployment. Several lanes remain barricaded with police personnel stationed at key entry points restricting movement through the area. Most shops here are shut, daily activity has come to a standstill, and residents as well as shopkeepers we spoke to declined to come on camera. Many said they fear legal repercussions following arrests made after clashes during the demolition. Nearby madrasas and community spaces also remain closed. While the police say the demolition was carried out in a compliance with the Delhi High Court order and after consultations with local representatives. डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपीज है, तो अपना फोर्स लेके उनको पुश बैक किया विद यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। The situation on the ground remains tense, marked by silence, caution, and a visible security presence across the neighborhood.